इंडिया काफ़ी क्लेवरली प्ले कर रहा है, जहाँ पे वो वेस्टर्न पार्टनर्स को इसमें लेके आ रहा है। इंडिया भी एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करता है। इंडिया भी कहता है कि ग्लोबल साउथ को द शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक मिला है काफ़ी देर तक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट सर्व्स वेस्टर्न इंटरेस्ट कि उनका एक इम्पॉर्टेंट एलाई, इम्पॉर्टेंट पार्टनर ब्रिक्स में है, एंड that space has not been ceded entirely to China and Russia and the Dragonware alliance. Muslims are actually a minority in India. India की जो Muslim population है, it's as much as the entire population of Pakistan. Roughly. They are minority. My majority, Hindus are the majority. So India has been quite open-minded. Nevertheless, it has been quite vocal about the interest of Afghan women, Afghan minorities, and rational people across Afghanistan in general. We often talk about how SARC is dead. So SARC might well be dead, but BIMSTEC is still alive. और वहाँ पे ही अभी सारा फोकस जा रहा है. I don't think Indian policy makers are losing sleep over no movement in ties with Pakistan. There is not a lot of desire in India के कुछ बदले पाकिस्तान के रिलेशंस में। इंडिया ने अभी तक हिस्ट्री से यही सीखा है कि जब भी हम ट्राई करते हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस का, हम डायलॉग ओपन करते हैं until the next terror attack next week. Hello and welcome to another episode of Timesglo podcast. Today we are pleased to have someone from our neighborhood, Miss Jyotsna Mehra. How are you doing, Jyotsna? Thank you, Faisal, and thanks to the entire Timesglo team for having me. It's my pleasure. It's a pleasure to have you on our show. First of all, I would like to introduce you a bit. Then I would like you to introduce yourself. Jyotsna Mehra is formerly been working on Ministry of External Affairs, India. She is a young leader from Pacific Forum. Also, she is alumni from the University of Manchester. So this was all that I know about Jyotsna. So I would like my audience, for my audience, to let you introduce yourself. Thanks, Faisal. So you're right. I went to the University of Manchester where I studied politics and international relations for my bachelor's. और उसके बाद आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और वहाँ पे मैंने मॉडर्न साउथ एशिया पढ़ा था, बट मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट वहाँ पर भी साउथ एशिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे था। इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे ज़्यादा था। और उसके बाद आई केम बैक आफ्टर वर्किंग विद द थिंक टैंक इन द यूके, एंड आई होल्ड सेवरल एसोसिएशंस विद थिंक टैंक्स इन इंडिया, इन द यूके एंड इन द यूएस। एंड उसके बाद मैंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंसी की है 3 years के लिए, वो भी फॉरेन पॉलिसी में की है। लेकिन वो आई वाज नॉट अ सिविल सर्वेंट, तो वो हम लैटरल एंट्रेंस के लिए अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। जब आपके पास बैकग्राउंड हो इंटरनेशनल रिलेशंस में या किसी भी फील्ड में, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। और अभी मैं इंडिया और फ्रांस में बेस्ड हूँ, और मैं इंडिया और फ्रांस और in general India's relations with major powers इन पे काम करती हूँ। अच्छा, सही, नाइस। मैं सबसे पहले जो recent development है, that is BRICS में, जो कि there have been 6 more countries included in BRICS, और उसमें ये डेवलपमेंट हुई जोहान्सबर्ग में। तो where there was this talk main कि सबसे पहले तो जो चीज़ है वो है that जो प्री एग्जिस्टिंग जो मॉडल है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको शिफ्ट करना है टू ब्रिंग इट टू द ग्लोबल साउथ। और उसमें इंडिया इज अ मेजर पार्ट, जो उन मुल्कों में से शामिल है, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। तो सबसे जो मेन चीज़ है, बिकॉज इंडिया हैज़ डीप रिलेशंस विद द वेस्ट नाउ, और इंडिया की जो पहले नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, दैट इज इवॉल्विंग एज वेल, और इंडिया इसको बड़ा ही सही तरीके से मनूवर, जिसको कह सकते हैं, कर रहा है। तो जो वन ऑफ द थिंग्स दैट जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने कहा कि डी डॉलराइजेशन की जाए, ठीक है।
but that thing is, that thing can be tricky for India. So how do you see that, or how would India maneuver that thing? ठीक है। ब्रिक्स से पहले मैं आपको जनवरी 2023 में लेके जाना चाहूँगी, जहाँ पे इंडिया ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था। Hmm. उधर ऑफ कोर्स चाइना नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम देम 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एंड वी डिस्कस्ड अ होल रेंज ऑफ इश्यूज जो अभी ग्लोबल साउथ को के लिए प्रॉब्लम्स हैं, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू एनर्जी सिक्योरिटी टू access to technologies and what have you. The point was that we gather everything that we can, the feedback from that summit, and take it to G20, जिसके अभी हम चेयर है, और वहाँ पे हम बाकी मेजर पावर्स को एक ऐसा एजेंडा प्रेजेंट करें जिसमें ग्लोबल साउथ की नीड्स बिल्कुल सेंट्रल होंगी. So BRICS is one of the many initiatives that India is involved in, where India places the needs of the global south very central to its foreign policy agenda. अभी जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, यूर वेरी राइट, उसमें आपको थोड़ी सी जो विंड्स ऑफ चेंज ग्लोबल ऑर्डर में हो रही हैं, उसका पता चलता है. बट इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ कंट्रीज जो इंक्लूड हुई हैं ग्लोबल एक्सपैंडेड ब्रिक्स में, आपको उसमें दिखेगा कि इंडिया के पार्टनर्स बहुत इंक्लूड हुए हैं. अभी हमें इसका टेक्निकल नोहा नहीं पता चला है कि किस बेसिस पे एक्सपेंशन हुई है, बट ये पता चला है कि कंसेंसस था. तो अगर आप देखोगे कि जो 6 कंट्रीज ऐड हुई है, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना, उसमें से यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट इंडिया की वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका पॉलिसी के कॉर्नरस्टोन्स हैं. और ये जो कंट्रीज हैं ये वेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो even though India is very much involved in the BRICS and it often talks about de-dollarization and it takes part in, paying in rupees for various global commodities, but फिर भी इंडिया काफी क्लेवरली प्ले कर रहा है, जहाँ पे वो वेस्टर्न पार्टनर्स को इसमें लेके आ रहा है, और वो वेस्टर्न पार्टनर्स भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो वेस्ट के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे रखे और वो चाइना और रशिया के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करे, नॉट फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग वन अगेंस्ट द अदर, बट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द मोस्ट आउट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द वाइडर ग्लोबल साउथ. अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन बट ये चीज़ चैलेंजिंग तो यूएस के लिए तो स्पेशली चैलेंजिंग है, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने आफ्टर द कोल्ड वॉर जिस तरह वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में डोमिनेंट रहे, तो अब तो ऐसे तो नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए बहुत प्रेसिडेंट शी की जो स्टेटमेंट्स हैं या प्यूटिन की स्टेटमेंट्स हैं, उससे ये लगता तो नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि जस्ट दिस इज फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, दो कि उनकी स्टेटमेंट्स रही हैं और यही है कि हम वी वांट टू डेवलप द बट वी वांट टू डेवलप द साउथ, या जो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो डेवलपमेंट का नारा वेस्ट की तरफ से था वो दैट वाज इन इक्विटेबल, और उसमें इक्विटी नहीं थी, और बहुत सारी वो डेवलप्ड को डेवलप कर रहे थे. तो अगर उस सीन में देखा जाए तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर यूएस टू डाइजेस्ट. देखिए, ये इतना ब्लैक एंड वाइट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. इंडिया भी एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करता है. इंडिया भी कहता है कि ग्लोबल साउथ को द शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक मिला है काफ़ी देर तक. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट सर्व्स वेस्टर्न इंटरेस्ट कि उनका एक इम्पॉर्टेंट एलाई, इम्पॉर्टेंट पार्टनर ब्रिक्स में है, एंड that space has not been ceded entirely to China and Russia and the Dragon Bear alliance, as they say. So it serves Western interest. It serves actually everybody is a winner here. It serves Western interest. उनका partner इसमें है, even though they are seeing these sort of winds of change जो चल रही, जिसका आपने भी बताया. इंडिया के लिए अभी the most important win out of this was that it was able to get some of its friends on board. और चाइना और रशिया के लिए तो है, because they are getting a platform to project an alternate world order to the rest of the world.
ठीक है। अच्छा, चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, दो के बहुत ज़्यादा कोऑपरेशंस हैं उनमें, और जो चाइनीज़ बहुत सारी कंपनीज इंडिया में हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की बहुत ज़्यादा है इंडिया में। बट देयर इज़ दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि बॉर्डर का भी इशू है, दो दैट कैन नॉट बी लाइक। अब आजकल जिस तरह से एक इकोनॉमिक टर्म्स में बात होती है और बॉर्डर्स या इस तरह की चीज को सेकेंडरी देखा जाता है, बट देयर हैव बीन अ फ्यू क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अगर इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स देखा जाए तो हाउ वुड इंडिया डील विद चाइना? India is dealing with China on its own, and India is dealing with China together with a lot of like-minded partners. और हमने ये बात काफ़ी ओपनली की है कि हमारे रिलेशंस चाइना के साथ आर नो लॉन्गर नॉर्मल आफ्टर व्हाट हैपेंड इन अप्रैल मई 2020. और तब से अब तक बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, नॉट जस्ट बॉर्डर रीइंफोर्समेंट्स बट in general towards the economy, towards the tech aspects, towards actually strengthening our diplomatic relations with the US, with France, with the other Quad partners, with other countries in the Indo-Pacific. Um, I think China का जो question है, it's very much linked with the health and the growth of the Indian economy. और अभी तक तो लग रहा है कि we are doing well. I mean, of late, China की economy has been dealing with deflation. But, I mean, see, like you rightly said, economic concerns are also quite valuable. और border concerns थोड़े secondary हो जाते हैं, लेकिन our government has admitted that जब तक border concerns solve नहीं होते and हमारे accordingly China की unilateral actions को वो reverse नहीं करता है, तब तक हम at least we cannot expect growth in our ties. अच्छा, अगर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी वाइज देखा जाए, इंडिया हैज अ गुड रिलेशंस विद द मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्टर्न अलाइज और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार। सो अगर सिक्योरिटी उसमें एनर्जी सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो बहुत सारे इंडिया इज द मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज। बट जो इंडिया की मुस्लिम माइनॉरिटी है वो दे अगर वो हम व्हेन वी सी इट ऑन सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कुछ हो रहा है स्पेशली न्यू में हो रहा है, तो इंडिया माइट हैव बीन फेसिंग प्रेशर फ्रॉम दीज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। तो हाउ इंडिया सीज दैट, और उस चीज को इंडिया जो इंडिया का डोमेस्टिक आइडियोलॉजिकल लैंडस्केप है, तो इन कंट्रीज के साथ उसको इंडिया कैसे डील करेगा या कर रहा है? This is an interesting question, but I would first of all, I mean, a lot of us don't think that Muslims are actually a minority in India. India की जो Muslim population है, it's as much as the entire population of Pakistan. Roughly. They are minority. These Hindus are the majority. नहीं, सुनिए. So 80% हिंदूज हैं, 14.2% मुस्लिम्स हैं. बाकी के सारे जो रिलीजन्स हैं वो अंडर 2.3% में आते हैं. तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदूज आर द लार्जेस्ट मेजॉरिटी, मुस्लिम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी एंड द रेस्ट ऑफ देम आर माइनॉरिटीज. और इसमें भी कितनी ज्यादा आगे डिविजन्स हैं. तो देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीबडी, मुस्लिम्स, हिंदूज, बाय एनी ग्रुप, बाय एनी इंडिविजुअल is deplorable and it should be rightly punished. But I would also say कि ये एक specifically law and order का issue है, और law and order capacity इंडिया में of late ही ठीक होनी शुरू हुई है. लॉ एंड ऑर्डर के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो स्टेट की विलिंगनेस और एक स्टेट की कैपेसिटी. सो ओनली इफ यू गेट रिचर, योर स्टेट हैज़ द कैपेसिटी टू डील विद प्रॉब्लम्स सच एज कम्युनल टेंशंस. But I would also like to draw your attention towards a recent study जिसमें ये पता चला है कि India has always had a problem of communal violence. It has always had a problem of rights. But since the 1990s, ये पढ़े नहीं है, ये कम हो रहा है. ये कम हो रहे हैं.
इन द लास्ट 50 years इस ये अभी हमारा लोएस्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कम्युनल वायलेंस. इतना relative peace का period in terms of writing पहले इंडियन हिस्ट्री में नहीं आया, and that's because like you said social media पे scrutiny ज़्यादा है, social media पे attention ज़्यादा मिलती है, and Indians actually form one of the largest chunks of social media users. तो पहले तो ये बात. सेकेंड बात आपने की थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हमारे एनर्जी सप्लायर्स हैं, उसकी भी कुछ एस्पेक्ट्स एंड क्वेश्चंस के जिसको हम डील करते हैं. तो सबसे पहले ये आएगा कि आई थिंक जब वो बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने इस्लामिक स्क्रिप्चर से कुछ कोट किया था, तब कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एनर्जी सप्लायर्स ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स रखी थी. और उसके बाद क्या हुआ था, देयर वाज अ स्ट्रिंग ऑफ beheadings, so called blasphemy beheadings in India. उसको भी काफ़ी अटेंशन मिली थी इन कंट्रीज़ में, एंड इन जनरल एटलीस्ट इंडिया में बहुत मिली थी. और अगर हम बात करें कि हमारे एनर्जी सप्लायर्स कौन हैं, उसमें भी हम देख लें कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनका भी आप ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स देखेंगे, इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लीन. और ये किस किस को सप्लाई करते हैं वो भी हमें देखना चाहिए. ये चाइना को सप्लाई करते हैं. चाइना का अगर इशू देखें तो सिंगजियांग का है, तो नोबडी टॉक्स अबाउट दैट. वी ऑल नो हाउ बिग बिजनेसेस ऑपरेट, राइट. उनका मेन कंसर्न ये नहीं है कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है. उनका मेन कंसर्न है ऑयल बेचना, और एनर्जी हंग्री कंट्रीज का मेन कंसर्न है कि एक अच्छे प्राइस पे हमें ऑयल मिल जाए. तो सबसे पहले तो ये बात आती है. रशिया का भी आप देख ले कि अभी how international relations work? तो इंटरनेशनल रिलेशन तो इंटरेस्ट पे काम करते हैं ना. Yeah, तो you're right. interest is I mean so deeply intertwined with their largest export, which is oil. And India, together with China and the US, is among the top buyers of this oil. तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए. और and I mean talking about Muslim majority countries and looking at the world from that lens is also very dated, I feel. अब आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया, यूएई don't project themselves as their identity solely being Muslim majority. They also Yeah, have that's changing. That's changing. उनका ट्राइबल, उनका कल्चरल आइडेंटिटी भी है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज डिफरेंट बिकॉज पाकिस्तान की आइडेंटिटी इज इंटरट्वाइंड विद it not being India and it being a Muslim state. But for Saudi Arabia, UAE, the story is very different. And they're also looking at a post-oil future. तो उसमें उनके लिए large economies partners रहेंगे. और उन large economies में एक इंडिया भी है. तो I mean, जब वो नूपुर शर्मा वाला केस हुआ था, उसके बाद भी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली लाइक अराउंड $43 billion का इन्वेस्टमेंट एक कंसोर्टियम जो यूएई और सऊदी अरेबिया का है, वो इंडिया की तरफ आया है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में. तो लुक, दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ, आई वुड से उनको करना पड़ता है. इट्स they have to do it if there is outcry in the world, but they're also quite aware of the complex inter-community relations in the subcontinent, in India, and they're quite aware of a growing ability of the Indian state to impose the better law and order situation in the country. So when it comes to the domestic issues such as there was this Manipur communal conflict, then the new one that I was mentioning previously, or ये चीजें तो how does it impact on India's foreign policy or India's diplomatic relations with other countries? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा है नहीं. मणिपुर का एक्चुअली सिचुएशन जो है वो इज़ नॉट कम्यूनल. इन मैतीज एंड कुकी क्लैन्स यू हैव क्रिश्चियंस एंड ट्राइबल पीपल, हिंदू पीपल इन बोथ द कम्युनिटीज़. जो इशू है वो लैंड का है, वो रिजर्वेशन का है, और वो नारकोटिक्स की ट्रेड का है.
तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पॉडकास्ट। अगर हम उसमें जाएंगे तो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही डिस्कस करते रहेंगे। और जो नू में वायलेंस हुआ था वो भी काफी ज्यादा, आई मीन, ऑफ कोर्स, अब आप एक साइड पढ़ेंगे, दूसरी साइड पढ़ेंगे तो आपको उसका बेटर व्यू मिलेगा, बट इट डजंट नेसेसरली इम्पैक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये ये टाइम्स निकल चुके हैं हमारे लिए। तो हम इस चीज में गुजर रहे हैं, अभी हम उसी एज में बैठे हैं। maybe you may be right. अच्छा, so let's move ahead क्योंकि ये टाइम गुजर चुका है, and we will move towards India's relation with Afghanistan, और अफगानिस्तान में जिस तरह से proactive approach रही है इंडिया की before this Taliban regime or after the Taliban regime, when Afghanistan was a republic and now it's it's not a republic. It's a sort of what the Islamic Emirate. तो पहले इंडिया के लिए तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा शौक था जब अफगानिस्तान पे, काबुल पे टेक ओवर किया तालिबान ने, बिकॉज देयर वाज ह्यूज इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान। बट स्टिल नाउ अब भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ वर्क कर रहा है बहुत सारे, उस पे बहुत सारी एड की फॉर्म में। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ India's relation with Afghanistan? I think India's relation with Afghanistan from a government point of view has been its relation with the people of Afghanistan. When the Taliban took over, the government was rightly worried about what it means for the women of Afghanistan and what it means for the religious minorities of Afghanistan. But बाद में हमने and yeah, you said, we had invested a lot in Afghanistan's infrastructure, and we had provided a lot of humanitarian aid, but that hasn't stopped. कोविड के टाइम पे मेडिकल सप्लाईज बहुत गए हैं, वीट अभी तक जा रहा है, एंड वी हैव ओपन चैनल्स ऑफ डिस्कशन विद द तालिबान ऑल्सो। पहले हमें थोड़ा ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि डज दिस मीन अ रिटर्न ऑफ the 90s for us, जहाँ पर, like we see it, Pakistan used Afghanistan as a means of, acquiring strategic depth in the country and using it against India. But I think now we are talking to the Taliban, and the Taliban has actually welcomed and asked Delhi to complete the stalled infrastructure projects in Afghanistan. They don't want India to, leave the Afghan people in lurch. And this is something which would also rival one of the other fears that we had in Afghanistan, at least initially, which we probably no longer have, which was how much influence will China exercise in Afghanistan once, an Islamic Emirate is formed in the country. So India has been quite open-minded. Nevertheless, it has been quite vocal about the interest of Afghan women, Afghan minorities, and rational people across Afghanistan in general. अच्छा, अगर Jyotsna देखें, हम let's come to the, we are now talking about the neighborhood first policy. We talked about Afghanistan, now we are talking about India and Pakistan relations. We have, shared past history, geography, we have a long border with each other, और भी इस तरह की जो कि चीज़ें हैं, दो के बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई हैं just after the partition, but there have been, opportunities for cooperation between the two countries, trade की opportunities थी, और but जो deep rooted bilateral disputes थे, they have clouded the prospects for amicable relations. अगर इसमें भी हम देखें इंडिया की तरफ से टेररिज्म का पाकिस्तान पे कहा जाता है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि दैट हैव नॉट बीन रिजॉल्व्ड येट, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आप फ्यूचर में हाउ डू यू सी द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्टेट्स?
India Pakistan से पहले let me just focus on neighborhood first in general. Pakistan has not been a very Please bring in China as well. चाइना पे भी आते हैं, बट आपको मैं हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसकी कुछ आपको इन लास्ट फ्यू इयर्स क्या हमें इसका फायदा मिला है उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक सेंट्रल फोकस रहा है। We've often spoken about how this region, the subcontinent, is not exactly, well integrated, but that is changing now. So India has invested heavily in domestic and international road, rail, and air connectivity projects in Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka. We continue to invest a lot in Nepal's hydroelectric projects. हम इलेक्ट्रिसिटी को भी अब द रेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में लिंक कर रहे हैं। तो अब ऐसा होगा कि बांग्लादेश नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकता है वाया इंडिया। सो वी आर कनेक्टिंग द ग्रिड्स टुगेदर। जो हमारा फिनटेक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूपीआई शायद आपने सुना होगा, वो अब हमारे नेबरहुड में यूज हो सकता है। नेपाल में हो रहा है, बट नॉट जस्ट नेपाल, इनफैक्ट इवन यूएई, फ्रांस, सिंगापुर में यूज हो रहा है। तो अगर हम we often talk about how SARC is dead. So SARC might well be dead, but BIMSTEC is still alive. और वहाँ पे ही अभी सारा फोकस जा रहा है। और I think, the other BIMSTEC countries are quite happy about it because BIMSTEC is in many ways reflective of today's realities. It's not very continental focused, it has a maritime focus. तो उसका ये अप्रोच है कि हमने इंडो पैसिफिक एंड की तरफ देखना है। तो उसमें आप इवन नेपाल एंड भूटान जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको बे ऑफ बंगाल के साथ लिंक कर रहे हो। आप साउथ ईस्ट एशिया जो कि इकोनॉमिकली बहुत डायनामिक रीजन है उसको, साउथ एशिया जो बहुत पॉपुलस रीजन है उसके साथ लिंक कर रहे हो। और हर एक बिम्स्टेक कंट्री को एक एक पॉलिसी एरिया दे रहे हो जिसको वो लीड करे, जिससे हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। So SARC was always a victim of the history of South Asia, especially like westwards. So East में तो neighborhood first policy is working very well, and I don't think Indian policy makers are losing sleep over no movement in ties with Pakistan. उनके लिए अभी ये important है। I think some people appreciated कि करतारपुर corridor open हुआ है। But apart from that, there is not a lot of desire in India के कुछ बदले पाकिस्तान के relations में। There's not much to gain. आपका डोमेस्टिक सारे का सारा वोट बैंक ही इसी उसको एंटी पाकिस्तान उसको बाय करता है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बाय करता है। दैट्स द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। देखिए डोमेस्टिक अब हम इंडिया को पाकिस्तान के साथ हाइफनेट करना बंद हो चुका है यहाँ पे। नहीं, this sells Jyotsna, you'll have to accept it. This sells, especially for India government, for though कि अब मोदी जो है वो he talks about developing India, the new India, but still the anti-Pakistan, anti-Muslim narrative for Indian vote bank that sells. That's the एक लोअर लेवल पे जरूर होता होगा, बट इसकी कुछ हमें ज्यादा पॉलिसी डिविडेंड्स नहीं मिले हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस में। इंडिया ने अभी तक हिस्ट्री से यही सीखा है कि जब भी हम ट्राई करते हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस का, हम डायलॉग ओपन करते हैं until the next terror attack takes place. आप पूरी करा देते हैं, आप और क्या पठान को करा देते हैं। Again, I never would like to go into that, but that's the reality. हम मेरे जो साइड से होगा, there have been the terrorism at our end, और हम बहुत कुछ फेस भी कर रहे हैं। The consequences that we have been facing, they might be much larger than you Indians have faced. But अगर ये चीज देखें तो there were the events that were orchestrated by the state, by your state.
इंडिया को एक्चुअली माइंड स्पेस चाहिए कि वो एक्चुअल इकोनॉमिक डिविडेंड्स ले पाए और रीजन को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर पाए। तो वो अगर पाकिस्तान के साथ इसमें जुड़ जाएगा तो इट वोंट बी एबल टू फोकस ऑन एक्चुअल डिविडेंड्स दैट वी आर गेटिंग आउट ऑफ एन ईस्टवर्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में नुकसान किसका हुआ है, आई मीन इंडिया में नोबडी इज लूजिंग देयर स्लीप ओवर इट अपार्ट फ्रॉम एन ऑड फ्यू ट्रेडर जो पाकिस्तान को ज्वेलरी बेचते थे या पाकिस्तान को आई डोंट नो लाइक टेक्सटाइल्स बेचते थे। बट पाकिस्तान के कॉमन सिटीजन्स को अब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स दुबई से लेने पड़ते हैं जो हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिलते हैं। और पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियसली इंडिया इज अ बिगर इकोनॉमी, तो अगर और बहुत सारी मार्केट है, पाकिस्तानी जो मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट हो सकती थी फॉर इंडियंस। या आई थिंक इंडिया के लिए इंडिया विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान हमारा इवन एक फॉरेन पॉलिसी इशू भी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ होम अफेयर्स इशू कि हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है और यहाँ पर टेरर अटैक ना हो इसकी कोशिश करनी है। तो पाकिस्तान doesn't really feature in the larger foreign policy of the country at the moment. That might change, and that actually also depends on who's going to be at the helm of affairs in Pakistan. अभी तो हमें वो भी नहीं पता है। और अगर देखिए अगर आपकी हाइब्रिड रिजीम रहती है और डिसाइड कर लिया who would be the at the helm of the affairs. अगर एक genuinely civilian government आती है who's not always talking about being on the same page with the establishment, then we can think about working with Pakistan. But अगर हमें पता ही नहीं कि हम किससे बात करें तो हम where do we even start? All right, that's understandable. That's understandable. ये इस चीज का तो मेरे पास भी I have no answer about this कि you know अच्छा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हैव गुड रिलेशंस विद चाइना और वी हैव बीन though the progress in on CPEC that have been slow during COVID, but it's now it's on boom, and there have been so much uh, there have been so much happening. First was the infrastructure, building projects that have almost been built, and we have now seen that the roads, railways, we through our northern border, we have been connected to Gwadar, that is the deepest port, and there is no. Before your podcast, I have had a podcast with a director from CPEC, उनके साथ तो उन्होंने मुझे बता रहे थे कि ट्रेड भी स्टार्ट हो चुकी है और स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स भी हैं जो कि दे आर प्रूविंग टू बी पाकिस्तान के लिए, अगर इफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैपेंस तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है पाकिस्तान के लिए. बट do you think is there any prospect that India can through Pakistan can utilize those routes and go into the Central Asian states? इंडिया ने पहले बहुत बार ये इस बारे में पाकिस्तान से बात की है जब रिलेशंस वर नॉर्मल. Pakistan wasn't really up for it because Pakistan thought कि India will exercise influence in Afghanistan and Central Asia through that. तो उसका जो हल निकाला इंडिया ने वो ये था कि हमने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी. और अभी रिसेंटली उसके कुछ हमने लीगल इम्पेडिमेंट्स को हटाने के लिए ईरान से बात की है. बट सेंट्रल एशिया इज इम्पोर्टेंट, सो दैट्स वन एरिया ऑफ फोकस. बट हमारा अभी काफ़ी फोकस जो है वो मैरीटाइम डोमेन्स में ज़्यादा है. तो सेंट्रल एशिया में ऑफ कोर्स compete करना as a market is important for India to be able to reach and operationalize the international north-south trade corridor is also important. But whether or not that happens through Pakistan is now a very dated question, क्योंकि अब हम directly ईरान के साथ कर सकते हैं. Even आपको याद होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे they were quite understandable कि if India is trying to reach Central Asia via Iran, even though US had complicated relationships with Iran at the time, उनको उससे कोई problem नहीं थी because they understood that the larger goal is to
be able to compete with China in that region. अच्छा, let's get back to the अब टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी में जिस तरह का रेवोल्यूशन आया है, और इंडिया जो है वो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर टेक पावर्स इन द वर्ल्ड नाउ, और ये तो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। और उसके दिस हैज़ बीन वन ऑफ द एम्बिशंस, जो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं वो इंडिया के रहे हैं, टू बी एट major power in tech, or with that comes a responsibility as well, or but बहुत सारी जो अभी जैसा कि कन्वेंशंस हुई या बुडापेस्ट में कन्वेंशन हुई, और इंडिया की जो थी वो लो की प्रेजेंस थी, और भी जो रूल सेटिंग है, नॉर्म्स मेकिंग प्रोसेस है, इंडिया हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इट रिस्पॉन्सिबली जिस तरह से उसको करना चाहिए था साइबर स्पेस के लिए, जो कि एक साइबर स्पेस की रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो why is that India is not taking it seriously? Because India views this very differently. So let me start this by talking a little bit about non-alignment and multi-alignment to shed a little bit more light on how India thinks about these issues. So the non-alignment थी जो कोल्ड वॉर के टाइम पे आई थी, इट वाज वेरी यूजफुल एट द टाइम जब हम मटेरियली इतने इंडाउड नहीं थे, वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. दिस वाज वन ऑफ दोस कार्ड्स दैट वी कुड प्ले. ना हम इनकी तरफ है ना हम इनकी तरफ है, हमारा अपना, हम दोनों ब्लॉक्स को रिजेक्ट करते हैं, वी आर नॉट अलाइंड. उसका एक ये भी था कि वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर हिस्ट्री एज हैविंग बीन अ कॉलोनी. जो मल्टी अलाइनमेंट आती है, back in the day, at least 2016, 2017 तक, a lot of India analysts, including myself, used to think कि multi alignment और non alignment में कुछ खास फर्क नहीं है. अगर non aligned हो, multi aligned हो, वही बात हो गई कि if you are friends with everybody, you're friends with nobody. But that has changed. Multi alignment तब आती है जब you have leverage, when you have resources, when you have capability that you can play around with. So now you're working with Russia, you're working with US, you're working in SCO, and you're working in BRICS, but you're very active in Quad. You're working, you get invited to G7 as a guest country of advanced economies, G7 group of advanced economies, but you're also leading the global South agenda in the G20. So you're basically trying to actively pursue interests, and that's it. And you have your capabilities that allow you to get that kind of maneuverability. तो जब हम नॉर्म सेटिंग की भी बात करते हैं तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने काफी क्लियरली कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू बोरो नॉर्म्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन और द यूएस. हम टेक में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बट वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ टेक. तो इसके लिए वी हैव टू सेट आवर ओन स्टैंडर्ड्स. हैविंग सेड दैट, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में हम अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं. अभी आपने चंद्रयान 3 का देखा ही है, मून लैंडिंग का. I forgot to congratulate you on that. Thank you. Thanks so much. I think it's a great achievement, not just for India, but for the developing world at large. Yeah, that's a great. तो उसका भी अगर आप देखें स्पेस में, तो अभी इंडिया जॉइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा ने इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें वो स्पेस की गवर्नेंस के नॉर्म्स बनाते हैं. तो उसका अब इंडिया पार्ट है. काफी देर से हम क्वाड में साइबर स्पेस की गवर्निंग के रूल्स सेट कर रहे हैं क्वाड पार्टनर्स के साथ. तो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में हम पार्टनर्स के साथ काम करें, बट वी वांट द पावर टू बी एबल टू चूज कि कौन सी टेक्नोलॉजी में कौन से रूल्स रखे जाएंगे. वी डोंट वांट एनीवन एल्स टू सेट द रूल्स फॉर अस. तो उसमें लेकिन ये भी है, आप मतलब यू शुड हैव योर से इन दैट, बट ये तो नहीं है कि ना कि आप उसमें पार्टिसिपेट ही ना करो. आप जाओ अपना एजेंडा पेश करो और बताओ कि हमारे ये रिजर्वेशंस हैं. तो I will convey that to my friends in various ministries. But no, look,
देखिए अगर वो एजेंडा पहले से सेट हुआ है और वो किसी और के बेसिस पे हुआ है, तो इंडिया वुड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। इंडिया का यही एम है कि हम अपना एजेंडा खुद लेके जाए और खुद ऐसी बॉडीज बनाए जहाँ पे एजेंडा सेट किया जाए। अभी आप ठीक है। इंडिया का एक ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखो, इंडिया सेटिंग इट्स ओन इम्प्रिंट ऑन इट। इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition ऑफ डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अब पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वी आर साइनिंग MOUs अक्रॉस द बोर्ड। तो इंडिया वांट्स इट्स ओन इम्प्रिंट ऑन द ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, दिस कैन बी द लास्ट क्वेश्चन, और ये है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स नॉन जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे कैसे काम कर रहा है, और जो इंडिया डजंट सीम के जो आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मसला है, दो इट्स वर्किंग ऑन इट्स डेवलपमेंट, बट दैट कैन बी अ थ्रेट टू द प्लानट, एज यू हैव सीन। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, एज आई हैव बीन watching a few footages जो कि आपकी स्टेट्स में ऐसी वो हो रहा था, फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें। तो बट इंडिया इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इट्स डेवलपमेंट रादर दैन, अगर प्लानट ही नहीं सर्वाइव किया तो सिविलाइजेशन ही नहीं सर्वाइव की, तो हाउ इंडिया वुड बी एबल टू डेवलप, शो द वर्ल्ड दैट आई एम अ डेवलप्ड स्टेट। फिर तो अकेले इंडिया डेवलप होगा। कि क्लाइमेट टेक मेरा क्लाइमेट पॉलिसी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई नो वी आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज विद सेवरल कंट्रीज। इंडिया इज a major recipient of investments from major powers on developing climate technologies. और इंडिया का जो मेन इसके बारे में रहा है वो ये है कि we were not historically the greatest contributor to emissions, and But we now have you to are. But now now we you are, are. but we are also a developing country. So so India ठीक है, आप says कि, डेवलपमेंट वैसे तो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, अब आप डेवलपमेंट में अपने आप को साइड कर लेंगे। हाँ तो हम ऐसे ही प्ले करते हैं। हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, एंड वी शुड हैव द राइट्स टू, अच्छा प्ले कर रहे हैं आप लोग। और हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलती है फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिससे हम अपनी क्लाइमेट एक ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा क्लाइमेट एजेंडा इज नाउ गेटिंग linked to all of our bilaterals, major bilaterals. It's a major part of our G20 agenda as well. हमारा जो मेन इसके लिए पॉइंट यही रहेगा कि जब टेक्नोलॉजीज डेवलप होएंगी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो हो भी रही हैं, तब हम इसके बारे में बात कर सकेंगे। बट अब आप अभी देखेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का भी एक इंडिया का इनिशिएटिव रहा है। मैंने ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की है। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जीज में इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइड अभी अचीव की है। इंडिया अपने पेरिस टारगेट्स को भी मीट करने के लिए अभी इट्स इन लाइन। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। आई लुक एट द इंडो पैसिफिक, और वहाँ पे भी हम अभी ब्लू इकोनॉमी पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि हाउ कैन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उनके उनका जो एंग्जाइटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड, उनको कैसे हम सॉल्व करें, उनकी इकोनॉमी को, ब्लू इकोनॉमी को कैसे हम डेवलप करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे सारे बायलैटरल्स का बहुत बड़ा एक फैसेट रहा है इन रीसेंट ईयर्स। ठीक है ज्योत्सना, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड एट द एंड, किसी भी कोई भी चीज आप कहना चाहें? No, I think we've covered all points. I would have liked to cover a little bit more about my areas of focus, which are the Quad and Indo-Pacific. But फिर कभी we can have we can have another podcast whenever Sure. you are free. तो Sure. आप चलें। Thank you so much for your Thank you so time. much. Thank you. Hopefully you enjoyed having this conversation. A lot. My best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you.